So in this video, I'm going to tell you 7 things which you should think about the night before an exam. The night before the exam is very horrible, very terrible. We are really very stressed and we feel very low. But by thinking these 7 things, you will be very energetic, you will be supercharged, your mood will change in an instant and you will feel positive, you will feel confident. So therefore, before exam, you should think about these 7 things the night before an exam. They are really helpful. Try this and you will really feel confident and you will do your best next day. So let's get into the video. First thing which you should think is positive imagination. What you have to do in this is you have to spend some time visualizing a positive exam experience. This will increase your confidence, help with nerves and enhance your mood. Therefore, you should think something positive. Like you're writing all the answers, you're attempting all the questions, you're not leaving a single question, आपका पेपर टाइम में कंप्लीट होगा, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट इन योर एग्जाम. आपको कॉन्फिडेंस ही आ गया है कि चलो मुझे इस टाइम आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे एंड यू आर फीलिंग रियली वेरी गुड इन योर एग्जाम हॉल. यू शुड थिंक ऑल स्टफ लाइक दैट. इसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? नेगेटिव. आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगी, ये वो, ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं सोचना. आपको पॉजिटिव ही सोचना है दैट यस मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने सब अटेम्प्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सारे क्वेश्चन के सही आंसर लिखे हैं, मैंने सप्लीमेंट्स लिए, मैंने बहुत कुछ अच्छे से लिखा है एंड आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई बेस्ट and I will receive best. You have to think in that way. I hope आपको ये point समझ में आ गया हो. Think positive before your exam, the night before your exam, okay? And exam के पहले भी positive ही सोचो, कुछ negative मत सोचो. उठने के बाद भी positive रहो and you will feel confident. Second thing which you should think of your best performance. In this, what you have to do is you have to think about a previous good performance. What helped you last time to do well in exam and how will you apply tomorrow? Think about that. What have you did last time in your last exam which made you feel very energetic and very positive, and how will you apply that tomorrow to feel positive, confident and feel very nice in your exam hall. Therefore, कुछ अच्छा प्रीवियस वाला अच्छा एक्सपीरियंस सोचो जिसमें आपने बेस्ट दिया था आपका, एंड उस टाइम आपको किस चीज़ ने हेल्प करा था आपका बेस्ट देने में, और वो आप कल कैसे रिपीट कर सकते हो उसके बारे में सोचो. प्रीवियस का कोई भी अच्छा एग्जाम्पल ले लो जिसमें आपने बहुत अच्छा किया था और उसको कल से रिलेट कर दो. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग मी. लास्ट टाइम अगर आपने आपको अच्छा स्कोर हुआ था ना, तो अगर आपने लास्ट टाइम अपना पेपर टाइम में कंप्लीट किया था तो वो आपने कैसे किया था उसके बारे में सोचो, तो कल आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो वो सोचो. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू आर क्लियर विथ माई पॉइंट. अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स. ओके, तीसरी चीज़ जो आपको सोचनी है दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन. What you have to do is you have to boost your confidence by reminding yourself of how well you have prepared and how much revision you have done. You have to tell it to yourself that yes, I have did so much revision, I have did so much repetition, I have recited everything, I have prepared well and I have did well, I have done my best, so I will receive best, right? You have to tell to yourself that yes, मैंने इतना कुछ किया तो मुझे इतने ही मार्क्स आएंगे जितना मैं सोच के जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ. मैंने इतना पढ़ा तो मुझे मार्क्स भी इतने ही आएंगे. I will receive out of marks, I will get my best. I have that confidence in myself. Tell this to yourself. I hope you're clear with it. Fourth thing which you have to think is focus on you. Yes, in this what you have to do is you have to focus on yourself and don't compare yourself to others, as this will make you feel stress. Instead, focus on what you can control, right? I hope आपको समझ में आ गया हो. आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना. अगर आपका 2nd रैंक आता है, 3rd रैंक आता है क्लास में, लास्ट रैंक आता है, कोई टेंशन नहीं है. पहले रैंक वाले के बारे में मत सोचो इतना. अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने इतना किया है ना, इस बार मुझे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं जितना मैं सोचा है मैंने, मुझे इतने ही आएंगे बिकॉज मैंने बहुत स्टडी किया है एंड आई हैव डिड माई बेस्ट इन माई स्टडी. सो येस, यू विल रिसीव बेस्ट. ये
अपने आप को फोकस में रख के बोलो खुद को कि मैंने किया है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मेरी लाइफ है, इट्स माई डिसीजन एंड आई विल गो विद इट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Fifth thing which you should think is about the challenge. See, if you see the exams as a threat, it will make you stressed. View the exam as an opportunity or as a challenge. This will make you feel better. Therefore, do not consider exams as threat. They are very helpful for us. We understand our capabilities due to exams, and therefore they are not threat, they are an opportunity, they are a challenge presented to you by your schools, by your teachers. So do not worry at all, face that challenge and just win that challenge, right? So take exams as a challenge, okay, as an opportunity, not as a threat. Sixth thing which you should think about is overcoming setbacks. See, remind yourself, have you overcome previous setbacks? This will help you deal with future challenges and build mental resilience. Therefore, remind to yourself so many times that how I have converted this problem to a solution in the exam hall, as I have told previously कि आपने कैसे टाइम मैनेज किया था पूरे पेपर का. दिस टाइम भी वैसा करो, वैसा अप्लाई करो वैसी टेक्निक्स. लास्ट टाइम आपने प्रीवियसली अच्छा किया था तो इस बार भी आप अच्छा ही करोगे, एंड आप जो भी चैलेंजेस होंगे उसको आप फेस कर जाओगे एंड यू विल डू योर बेस्ट. सो थिंक अबाउट दी सेटबैक्स जो आपको लास्ट एग्जाम में आए थे एंड विच यू कुडंट क्लियर इट. सो दिस टाइम यू कैन क्लियर इट आउट, एंड इसका सॉल्यूशन आपने पहले से निकाल के रखा है. फॉलो द सेम, एंड द थिंग्स विच यू हैवंट क्लियर्ड येट, क्लियर इट नाउ so that next day it might help you. Seventh thing which you should think about is a good night's sleep. Now it's not a thinking type, but yes, you have to take a very good night's sleep, very happy and positive sleep. Maximum 8 hours sleep. 8 से ज़्यादा मत लो और 6 से कम मत लो. So 8 hours सो जाओ अच्छे से, chill out because sleep, everybody loves sleep, right? I also love. So therefore take a good night's sleep. ये सारी 6 के 6 चीज़ें सोचने के बाद सो जाओ अच्छे से. A good night's sleep helps you to improve creativity, problem solving, concentration and memory. This is more important than last minute cramming, right? Therefore do not cram last at the end of the before sleeping, right? So आप उससे पहले जितना भी रट्टा मारना है मार लो, but I suggest that do not do cramming. Understand the topic, समझो उसको, because understanding is more important than cramming, right? So therefore do not cram at all. I'm totally against at that. And yes, take a good night's sleep for maximum 8 hours. It will help you to boost your confidence, concentration, memory, problem solving, creativity, and it will really help you. So at least take 8 hours of sleep. Do not extend from 8 hours. 6 hours से 8 hours तक का sleep लो. You will enjoy the sleep, you will enjoy next day, and you will do best in your exams. Still you feel very nervous, then you can ask me, you can write in the comments. I'll try to solve your problems in the best way possible from my side. So you can ask me your doubts, and thank you so much.